Hey guys, so today we'll discuss how to approach first year MD medicine or DNB medicine. So most of you will be in the counseling phase, so it's an important video for you all. So first of all, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ना चाहिए during our first year residency, that we'll be discussing later about the short books. But definitely you won't be getting enough time to read, and it's good also because you would be staying in the ward for the most of the time and you get to learn a lot of clinical skills. जैसे हमें यूजी में लगता था ना कि यार कैसे हमारे रेजिडेंट्स मरमर सुन के पहचान लेते हैं या फिर हाउ दे डू अ गुड ऑस्कल्टेशन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये सारे एग्जामिनेशन स्किल्स यू विल लर्न अ लॉट एंड एंड तक आते आते यू विल लर्न कि आप सिर्फ स्टेथोस्कोप से ही यू कैन मेक अ ग्रेट डायग्नोसिस. सो इट्स अ wholesome experience. So try to learn those skills rather than running from the ward and try to study. So try to auscultate each and every patient, try to see the ECGs of all patients, try to do the respiratory abdominal examination, and you will get to learn a lot. Other than that, what small books that you really need to go through your first year, because some of the things you should read, then only you can apply there. So first book is any ECG book. Like I preferred Balthazar, and it's a 200 250 page book and a short book, and you get to learn a lot from there, and then you can apply it in your wards. Because ward में क्या होता है, medicine ward में you have to get a ECG done of each and every patient, and in a cardiac patient आपको सारे ECGs daily चाहिए. You'll get to learn a lot, and अगर आप पढ़ा होगा तो you can apply it there. Especially ECGs of this hyperkalemia, hypokalemia. हम लोग hyperkalemia and hypokalemia ECG देख के diagnose कर लेते थे. Any electrolyte abnormalities or ECG changes of any arrhythmias. Okay, so you'll get to learn a lot and आपको सारे ECGs देखने को मिल जाएंगे. Suppose आपने बेल्थाजार पढ़ा and उसमें इतने ही different ECGs आप पढ़ोगे and you can see each of them in what. तो अगर आपने पढ़ा होगा then you can easily able to apply that. और फर्स्ट ईयर से ज़्यादा बेटर टाइम नहीं होता टू लर्न ईसीजी, क्योंकि आप वार्ड में ही रहते हो सारा टाइम. तो आपको सब पेशेंट के ईसीजीज डेली देखने को मिलते हैं. इवन सीनियर्स को भी नहीं मिलते क्योंकि सीनियर्स ऐसे वंस इन अ डे आएंगे या डे और इवनिंग में आएंगे, तो तब तक पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर इतना सिंसियरली सीनियर्स ईसीजी नहीं देखते. सो यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट ईसीजीज. अनदर book that I would recommend is Sanjay Pandya book of fluids and ABG. So ABG is also again important thing, and ABG read करना हम सबको basics तो आता ही है because we have learned it during our preparation, but उसका application you will really learn in your first year PG. And for that you need this Sanjay Pandya's book. It's a 70 80 pages book, and also you have to like write fluids of each and every patient. It's a duty of a first year only. So fluid management आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, किस पेशेंट को एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं देना है, किस पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है. And that too you will get to learn about from this Sanjay Pandey. And electrolyte abnormalities, hyponatremia, hypernatremia, hypokalemia, ये सब कैसे करेक्ट करने हैं. You'll get to learn it from there, and then you have to apply it in your ward. And first year का ही काम होता है ये सब मैनेज करना, and you will learn about it क्योंकि बहुत ही सारे पेशेंट्स आएंगे इन सब electrolyte abnormalities के. Another thing that I would recommend is this Washington Manual of Internal Medicine. It's again a short book, and it contains all the diseases and their investigations and diagnosis and treatment in a short span. So you can keep it in your ward, and whenever a rare diagnosis or a rare disease comes, you can just read it from there. And up to date app, it's a app that you can download in your phone, and then you need a subscription. It costs around 9,000 per year, and also some colleges provide it for free also. So उसमें भी ऐसे है कि you can like write down any disease. So suppose I got a patient of PSTN, or got a patient of membranous glomerulonephritis. So मैं उसमें लिखूंगा and I'll come to know what are the investigations that I need for the diagnosis, and then what is the treatment that should be given. And it's ऑलमोस्ट अप टू डेटेड, एंड सारे न्यू न्यू जर्नल से ही वहाँ पे ट्रीटमेंट आता है. तो इट्स अ ग्रेट ऐप, एंड वहीं से देख के मोस्टली ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं इन वार्ड्स, क्योंकि यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग. तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड टू स्टडी. बट मोस्टली जो आपका मोस्ट टाइम रहेगा वार्ड में, तो यू वोंट बी गेटिंग इनफ टाइम टू रीड, बट फोकस ऑन द स्किल्स दैट यू कैन लर्न. ऑल्सो फर्स्ट ईयर इज द ओनली टाइम जब आप वार्ड में ज़्यादातर रहते हो. पूरे आप ऐसे you will be in the ward for 36 hours stretch, so you'll come to know about the natural history of the patient, कि how the patient deteriorated, what we can do to save the patient at that time, or how the patient improved from a lowest point. So
ये सारे जो आपको स्किल सीखने को मिलते हैं, यू कैन अप्लाई इट इन योर सेकंड ईयर। तभी हमें सेकंड ईयर में पता लगने लगता है कि हाँ, अभी पेशेंट इस पॉइंट पे है, तो व्हाट कैन बी द कोर्स ऑफ द पेशेंट। यहाँ से पेशेंट डिटरेट करेगा, यहाँ से पेशेंट इंप्रूव कर सकता है, एंड व्हाट वी कैन डू टू लाइक काउंटरैक्ट इट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, एंड 90% of the MD medicine will be learnt in the first year only. बाकी yes में you can read in the library or so, but अगर आपने फर्स्ट ईयर में पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, you won't be getting enough skills that is needed for a MD medicine person. Apart from it, another important thing is how to manage toxicity, because सब लोगों को लगता है कि मेडिसिन में टॉक्सिसिटी है, and it is true because the working hours and the number of patients are more, so definitely थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी उसके accordingly हो जाती है, but the most important thing to manage toxicity is कि you should have a great bond amongst your colleagues. Suppose you are a first year PG, so suppose you are a first year PG, so you should be having a great bond amongst yourselves, and also with the interns, so that you will feel relaxed in the times जब आपको ऐसे toxicity feel हो रही है. Apart from it, the bonding between the colleagues also help कि आप exchange कर सकते हो duties accordingly, जैसे आपकी requirement है, and also pre-emergency days जो होते हैं are comparatively lighter. So most of the residents, what they do is कि pre-emergency days पे they go out or they have fun or party so that they can feel light. So all these are ways to manage toxicity. Otherwise, it's a wholesome experience and you will love it. All the best.